Dear students, today we study excitation energy. Energy required to move an electron and atom from its ground state to an excited state is called excitation energy. Ground state जी माना है the principal quantum number जी को है n जी को है one electron in first orbit first state जी को it is said to be जी को है ground state and other state जी है for principal quantum number in second, in third, now these are called excited state. Excited energy required to move an atom electron from its ground state to any excited state called excitation energy. बराबर है equal है difference between energy of excited state and energy of ground state. In the hydrogen spectrum we study ग्राउंड स्टेट में पेरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जेका हुई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जॾहिं इलेक्ट्रॉन पेरे ऑर्बिट में आए न पंहिंजी एनर्जी लॉस करे थो न गेन करे थो ऐं उनजी टोटल एनर्जी जेका आहे इट रिमेन्स जेको आहे कांस्टेंट अंटिल इट रिमेन्स in जेको आहे ग्राउंड जेको आहे स्टेट until electron remains in जेको ground state the total energy of electron जेको it remains जेको आहे constant according जेको आहे energy of electron in the nth orbit बराबर आहे minus 13.6 electron volt. Honey, you electron that can be excited from ground state ka any higher state. And higher state these are also called excited state for the electron. जेकॾहिं अवां इलेक्ट्रॉन खे जेको आहे एक्साइटेड करणु चाहियो था इलेक्ट्रॉन जी ट्रांज़िशन इलेक्ट्रॉन जंप ॾे ग्राउंड खां जेको आहे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड बाय द हेल्प ऑफ जेको आहे एनर्जी बाय जेको आहे एक्सटर्नल सोर्स दैट इज जेको आहे बाय द फोटॉन बाय जेको आहे हीट बाय जेको आहे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड बाय जेको आहे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जेको आहे एनर्जी दैट इज जेको आहे फोटॉन जेकॾहिं अवां चाहियो था इलेक्ट्रॉन खे एक्साइटेड कयूं पहिरीं ऑर्बिट खां ग्राउंड खां सेकंड ऑर्बिट एक्साइटेड जेको स्टेट में हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय कंदासीं जंहिंजी एनर्जी जेका आहे इट इज इक्वल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन जेको आहे एक्साइटेड स्टेट ऐं ग्राउंड जेको आहे स्टेट हाणे फॉर सेकंड जेको आहे एक्साइटेड जेको आहे स्टेट सेकंड ऑर्बिट में वी नो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्राउंड में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंप्लीफाई कंदासीं
10.2 electron volt energy is required. Such amount of energy जेका है, it is called जेका है excitation energy. इलेक्ट्रॉन के पहले ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में सेकंड स्टेट एक्साइट स्टेट में लेफ्ट करने जिला energy is required in the form of photon, in the form of heat, potential difference जेको आहे हाणे असां इलेक्ट्रॉन ते वो फोटॉन स्ट्राइक कयो आहे जंहिंजी एनर्जी हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन खे ग्राउंड स्टेट में सेकंड ऑर्बिट एक्साइट स्टेट में लेफ्ट करण जे लाइ व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी. Now 10.2 electron volt is required. Electron can be excited by light by the photon, by potential difference, by heat. Corresponding potential is also called exciting potential. Potential electron के excited क्यों ground का excited state. सेकंड है आयनाइजेशन जेका एनर्जी है पोटेंशियल. एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम इज कॉल्ड जेका आयनाइजेशन जेका है एनर्जी. एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू द इन्फिनिटी ऑर्बिट. सी जेको फॉर हाइड्रोजन एटम C electron in the first state, first orbit ground state, and electron के to lift the electron from ground state to infinity. Infinity माना वो region, वो point जिते electron is not bound with attraction of nucleus, with attraction of proton. माना वो एनर्जी जेका इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट में जेको आहे लिफ्ट करे वई आहे इन्फिनिटी ॾांहुं. इन्फिनिटी माना जिते इलेक्ट्रॉन जेको आहे इट बिकम जेको आहे फ्री, नॉट बाउंड विथ nucleus or atom, not bound with attraction of proton. Now such amount of energy is called ionization energy. It is also equal difference of energy between energy for infinity minus energy for ground state. For the hydrogen atom, may we study energy of electron in infinity state में that is 0 and ground state में minus 13.6 electron volt. Multiply क्यों से 13.6 electron volt. Such amount of energy जेका है it is also called ionization जेका energy. and वह static केसी for जेको हाइड्रोजन स्टेट एटम. हाइड्रोजन जे एटम में इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट का जेको आहे इन्फिनिटी ॾांहुं मूव करण जे लाइ जेको आहे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड. द पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन नीड to be accelerated so that it requires energy equal to the ionization energy called ionization potential. ये समझो ये सारे इलेक्ट्रॉन अहाँ एक्सेलरेट करे रहिया आहियो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी. हाणे आयनाइजेशन एनर्जी जेका हुई 13.6
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाणे इलेक्ट्रॉन खे तव्हां एक्सीलरेटर कयो आहे बाय यूज़िंग जेको आहे पोटेंशियल सो सच पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड जेको आहे आयोनाइजेशन जेको आहे पोटेंशियल दैट इज 13.6 volt is required to lift the electron from ground state to infinity.